नमस्ते, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। के सरोदी गांव के प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या करके आत्महत्या का अंजाम देते पति को रेलवे ट्रैक पर लेटा दिया। दादरा नगर हवेली में कोरोना केस बढ़ते सिलवासा सामरवनी पंचायत हॉल में वैक्सीन केंद्र की शुरुआत। वलसाड सिविल अस्पताल के कर्मचारियों की भयानक लापरवाही सामने आई। पारडी नगर में व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक बंद में 100% सफलता प्राप्त हुई। अब समाचार विस्तार से। पारडी के सरोदी गांव के प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या करके आत्महत्या का अंजाम देते पति को रेलवे ट्रैक पर लेटा दिया। अप्रैल 5 और 6 की रात को प्रेमी दर्शन और पत्नी मनीषा ने खूनी खेल रचा। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर पूरे षड्यंत्र का भेद सुलझाया। वलसाड के डीवाईएसपी ने पत्रकार सम्मेलन बुलाकर हत्या का भेद कैसे हल किया उसकी पूरी जानकारी दी। पारडी तहसील के सरोदी गांव के बरवाड़ी फलिये में रहते प्रकाश नगीनभाई पटेल का 6 अप्रैल के रोज मोतीवाड़ा रेलवे ट्रैक पर से शव मिला था और पास में ही मृतक की स्प्लेंडर बाइक नंबर GJ15 DB 2079 बिनवारसी हालात में मिली थी, जिसकी पुलिस ने जांच करते प्रकाश भाई होने की जानकारी प्राप्त होते मृतक के पत्नी को जानकारी दी गई थी। पुलिस ने पहले तो आकस्मिक मौत का गुनाह दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसमें मृतक प्रकाश भाई की पुत्री, माता और पत्नी की बारीकाई से पूछताछ करते समग्र हत्या का मामला सामने आया था। आरोपी पत्नी मनीषाबेन पटेल और उनके प्रेमी दर्शन रमेश भाई पटेल निवासी पारडी पोनिया मार्ग के साथ मिलकर अप्रैल माह की 5 और 6 तारीख को प्रेमी और पत्नी ने खूनी खेल रचा था और पति के हत्या का मामला आत्महत्या में तब्दील करने रेलवे ट्रैक पर सुलाया गया था। वलसाड एसपी डॉक्टर राजदीप सिंह झाला के मार्गदर्शन में पारडी पुलिस के PSI BN गोहिल की टीम ने मामले की गंभीरता को देख समग्र षड्यंत्र के बारे में पर्दाफाश किया था और खुदकुशी में तब्दील करने के नाटक का पर्दाफाश करते आरोपी पत्नी मनीषाबेन पटेल और प्रेमी दर्शन रमेश भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था। वलसाड डीवाईएसपी MN चावड़ा ने पत्रकार परिषद बुलाकर पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश किस तरह किया, जिसकी समग्र जानकारी दी थी। पारडी पोलीस स्टेशनની હદમાં ઉદવાડાની નજીક રેલવે પાટા ઉપરથી ગઈ તારીખ 6 એપ્રિલના રોજ વહેલી સવારે 6:01 વાગ્યાના સુમારે એક અજાણ્યા માણસની ધડ કપાયેલી હાલતમાં રેલવે પાટા ઉપર રેલવે ટ્રેન ફરી વળેલી તે હાલતમાં લાશ મળેલી અને તપાસ કરતા આ માણસ પ્રકાશભાઈ રહે સરોદીનો હોવાનું જણી આવેલું અને તેના આધારે તેના ઘરે જઈ તપાસ કરતા તેની પત્ની મનીષાબેન મળેલા અને મનીષાબેનની જાહેરાત લઈ અને આ અકસ્માત મોત દાખલ કરવામાં આવેલું હતું અને તેમાં આ ભાઈએ આત્મહત્યા કરેલાનું પ્રથમ દ્રષ્ટિએ તેમની પત્ની મનીષાબેને જણાવેલું હતું। ત્યારબાદ આ કામે મરણ જનાર પ્રકાશભાઈ છે તે તેની માતા જે છે તેનાથી બાજુમાં જ રહેતા હતા। તેની માતા અલગ રહેતી હતી અને પ્રકાશભાઈ તેમની પત્ની મનીષાબેન અને 3 સંતાનો સાથે અલગ વસવાટ કરતા હતા અને આ બેન જે મરણ જનારની માતાએ શંકા વ્યક્ત કરેલી કે તેની દીકરાની પત્ની છે રાત્રિના સમયે મેં એને જતા જોયેલી છે। તેના અનુસંધાને પૂછપરછ કરતા આમાં આ જે મનીષાબેન છે મરણ જનારની પત્ની એને એક દર્શન નામના ઈસમ સાથે પ્રેમ સંબંધ હોય, જે દર્શન પારડીના પાળિયા ગામ ખાતેનો રહેવાસી છે અને આ બંનેને વચ્ચે પ્રેમ થઈ ગયેલો હોવાના કારણે આ પ્રકાશને આ બંને જણાએ ભેગા થઈ રાત્રિના સમયે મારી નાખેલ અને રેલવે ટ્રેક ઉપર આને દર્શનની ઇકો ગાડીમાં લઈ જઈ અને મૂકી આવેલાની હકીકત જણાઈ આવેલી છે। આ બનાવ છે એ તેની છોકરી કિંજલ જે છે તેને જોયેલી છે અને તેને પણ ધમકી આપેલી હતી। તેના કારણે આ દીકરીએ
આ હકીકત પોલીસને કે તેને અન્ય સગા સંબંધીને જણાવેલ ન હતી. હાલમાં બંને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને આ ગુનાની તપાસ કરવામાં આવી રહેલી છે. હત્યાનું મુખ્ય કારણ કે આ પ્રકાશભાઈ મરી જાય તો બંને જણા શાંતિથી વ્યવસ્થિત રીતે એકબીજાને મળી શકે અને ભવિષ્યમાં આગળ જિંદગી સારી રીતે જીવી શકે. આ બંને જણા મેરિલ કંપની વાપીમાં છે, ત્યાં આ મનીષાબેન પેકેજિંગ વિભાગમાં કામ કરતા હતા અને આ દર્શન છે એ હેલ્થ વિભાગમાં કામ કરતા હતા. અને દર્શન પાસે ઇકો ગાડી છે પોતાની, તો આ કંપનીમાં જે કર્મચારીઓ હોય તેને પણ તે પૈસા લઈને લઈ જતો હતો અને મનીષાબેન અને તેને પ્રેમ થઈ ગયેલો હતો. दादरा नगर हवेली में कोरोना केस बढ़ते सिलवासा सामरवानी पंचायत हॉल में वैक्सीन केंद्र की शुरुआत. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन और दीव माहिती और प्रचार विभाग सिलवासा की माहिती के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विश्व आरोग्य संगठन WHO ने भारत सरकार कोविड-19 बीमारी को महामारी घोषित की है, जिसके लिए सुविधाएं और मार्गदर्शन के लिए जिला दादरा और नगर हवेली की तैयारियां बढ़ गई है. उसी के साथ वहीवटी तंत्र ने अनेक विभागों की टीमें बनाई है, जिसमें दादरा में कोरोना के केस बढ़ते सिलवासा सामरवानी पंचायत हॉल में वैक्सीन केंद्र को प्रारंभ किया गया था, जहां लोगों ने वैक्सीन का लाभ लिया था और ले रहे हैं. विनोबा भावे सिविल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर SK महला के बताए अनुसार दादरा नगर हवेली में वैक्सीनीकरण का काम करते हुए संख्या 1212 तक की गई है, जिसमें दादरा नगर हवेली में 25,000 से ज़्यादा लोगों ने जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन्होंने वैक्सीन ली है, जबकि 5,000 स्टाफ और 2500 से ज़्यादा नर्स और हेल्थ वर्करों को वैक्सीन दी गई है. दादरा नगर हवेली प्रशासन के पास वैक्सीन ज़रूरियात के हिसाब से स्टॉक है और 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन का लाभ ले, ऐसी अपील भी की गई थी. वलसाड सिविल अस्पताल के कर्मचारियों की भयानक लापरवाही सामने आई. इलाज के अभाव में मरीजों की हालत गंभीर. वलसाड जिले में आई सिविल अस्पताल में भयंकर लापरवाही सामने आई थी, जिसमें उपचार के लिए आए मरीजों के साथ उनके परिजनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. यहाँ तक ही बात नहीं रुकी, कई मरीजों को तो लगातार 3 घंटे तक एम्बुलेंस में ही बैठकर उपचार के लिए नज़र गड़ानी पड़ी थी, जबकि एक मरीज ने तो अस्पताल में स्ट्रेचर पर ही अपना दम तोड़ दिया था. तो कई कोरोना से हुई मौत के परिजन शवों को ले जाने के लिए सुबह से ही भटक रहे थे, जो दृश्यमान हुआ था. इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही हमारी टीम तुरंत सिविल अस्पताल पहुंची थी. बाद में जांच करते कई चौंकाने वाले दृश्य सामने आए थे, जिसमें एक महिला मरीज को शाम 6 बजे से अस्पताल के बाहर सुलाया गया था, जिसको रात 10 बजे तक स्ट्रेचर भी नहीं मिला था, जबकि एक मरीज के CT स्कैन का रिपोर्ट ही अस्पताल के डॉक्टरों से कहीं खो गया था. तो अस्पताल आए मरीजों के परिजनों ने गुस्साए कई आक्षेप किए थे, जिसमें कई सारी लापरवाहियां भी देखने को मिली थी. કામગીરી ફાસ્ટ ચાલુ થઈ ગઈ એકદમ. એ લોકો રજા નથી આપતા, અમે અમારી જવાબદારી પર લઈ જતા છે, તો અમને અમારું પેશન્ટ જોઈએ. બસ આટલી તમે અમારી પાસે કૃપા કરશે ને તો અમારે તમારો આભાર માનીશું. સવારની વાત છે, આ બેન એટલા બેસેલા છે. એ બેન બી સરકારી હોસ્પિટલમાં જ નોકરી કરતા છે. બસ ડિટેલ તો બતાવે. અમારું પેશન્ટને એ લોકો લઈ ગયેલા છે, પછી વાત કરવા નથી માંગતા. અમારું પેશન્ટ અમને વાત કરાવો. મરી ગયેલો છે એને પણ અહીંયાથી લઈ જઈને વેન્ટિલેટર પર એ લોકો મૂકે છે, તો એ લોકો કેમ ડિટેલમાં નથી આપતા કે માણસ મરી ગયો પછી એની જરૂર શું છે વેન્ટિલેટર પર લઈ જવાની? ડોક્ટરોને કોઈ જવાબ મળતો નથી અહીંયા. અને અહીંયાના ડોક્ટરો અહીંયાના જે 2-5 ડોક્ટર હતા તે બી ભાગી ગયા અને બીજા નવા આવ્યા છે. અદલાબદલી થતી રહી છે, પણ ડિટેલમાં કોઈ કારણ બતાવો અમને. અમને ખાલી વાત કરાવો એમ કહેતા છે, તभी વાત નથી કરવાની. ગુજરી ગયેલા એ લોકોને પોતાને ખબર નહીં પડે કે બોડી ક છે, માણસની બોડી ક છે, એ લોકોને પોતાને નથી ખબર કે આ માણસની લાશ કા મૂકેલી છે. 5 વાગે પેલો માણસ સવારે અમારું માણસ સાથે વાત કરાવો.
માણસ છોકરી લાવ્યા અહીંયા જ નિકાલ થઈ ગયો ને એ લોકો વેન્ટિલેટર લઈ ગયા. એ લોકો હવે અંદર જઈને એમ કે તમારો પેશન્ટ એક્સપાયર થઈ ગયો. જો કે અમારા સમયથી એક્સપાયર થઈ ગયેલો પેશન્ટ ને આ લોકો આવેલા છે, કોઈને ડાટ એ લોકો આપતા નથી, ખાલી આ લોકો રૂપિયા બનાવે છે બસ. 100 વાગે ના આવેલા, હજુ કોઈ ટ્રીટમેન્ટ કરી નથી અને ફાઇલ બનાવીને મૂકી દે તો બધા રિપોર્ટ અંદર મૂકી દેતા. અમે ડિસ્ચાર્જ કરવાના, અમને જવાના, એ લોકો ફાઇલ બી આપે, બધા રિપોર્ટ તેમાં સીટી સ્કેન કરાવવામાં પૈસાની તથા પૈસા કરીને અમે કર્યું. ડૉક્ટરે તો કંઈ કીધું જ નહીં ને, લીધું જ નહીં, જેવા ઊંઘેલા તેવા જ 100 વાગે ન અહીંયા જ પડેલા છે, સ્ટેચર બી નહીં આપ્યું. ફાઇલ બનાવી ને રિપોર્ટ કર્યો, બધા રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા. તારની હાથે થઈને 10 મિનિટમાં અહીંયા ફેસ નીકળી ગયો તો બી એ લોકો વેન્ટિલેટર હજુ મોડામાં નાક કરે છે, કંઈ થતું નથી. ટ્રીટમેન્ટ હજુ કંઈ આપી જ નથી, લાવીને તરત હજુ તો સુવડાવીને ઓક્સિજન આપ્યું, બસ બીજી કંઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી. સીટી સ્કેન કરીને લાવ્યા, રિપોર્ટ અહીંયા બતાવ્યો, કોરોનાનો રિપોર્ટ કાઢ્યો તે તો નેગેટિવ બતાવ્યો. પછી આપ્યો તે તો કાં ખોવી નાખ્યો તે જ નહીં ખબર. હમણાં માંગે ત્યારે કંઈ નહીં મળે એવું કે અમને નહીં મળે, જાણે અમે જાણે ત્યાં વાત કરી દઈએ. કાં મૂકો તો એવું ખોવાઈ ગયો એવું કે કાં લખ્યો હોય તે લોકો તે જ નહીં જાણે તે. વાગે લાવેલા અને 11 વાગે અંદર લીધા. કેવું છે પછી 5 વાગેની ડેથ થઈ ગઈ, હજુ સુધી નહીં આપે ગોળી. એમ કે 1 વાગે આવે, 2 વાગે આવે, 3 વાગે આવે રિપોર્ટ. पार्टी नगर में व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक बंद में 100% सफलता प्राप्त हुई. कोरोना का नया तनाव शरीर में तेजी से फैलता है, जो एक खतरे की घंटी है. पार्टी में कोरोना महामारी रुके और लोगों को छुटकारा मिले, उसके लिए कलेक्टर श्री की सूचना के मुताबिक पार्टी बाजार में संपूर्ण लॉकडाउन रहा था. लोगों ने स्वैच्छिक बंद रखा था. पार्टी नगर पालिका के प्रमुख हसूभाई राठौड़, जिला पंचायत के शासक पक्ष के नेता शैलेश भाई पटेल, वरिष्ठ पत्रकार और मेडिकल शॉप के संचालक के बताए अनुसार पार्टी में संपूर्ण बंद था, जो अच्छी बात है. जहां बाजार भरा हुआ रहता था, वहां लोगों ने स्वयंभू बंद रखकर कलेक्टर की सूचना और मान रखकर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कटिबद्ध बने थे. सरकार को साथ सहकार दे रहे हैं. रास्ते सुमसाम बने थे. लोगों की सूझबूझ से कोरोना महामारी रुकेगी और आने वाले दिनों में लोगों को मुक्ति मिलेगी. इसके लिए लोग एक दूसरे के संपर्क में कम आए और सभी नियमों का पालन करें, वो ज़रूरी है. हाल ही में पड़ोसी राज्य संघ प्रदेश में भी कोरोना के केसों में बढ़ोतरी होते शादी के लिए सिर्फ 50 लोगों की परमिशन दी गई है. तो पार्टी नगर में बाहर से फेरी के लिए आते लोगों को रोकना, छोटे बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजना, बिन जरूरी घूमना नहीं, सोसाइटियों में इकट्ठा होना नहीं, मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और अगर कोरोना के लक्षण दिखाई दे तो 104 या 108 का संपर्क करना, सोसाइटियों के प्रमुख या सेक्रेटरी को तुरंत ही जानकारी देना जैसी जरूरी सरकारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा तो जरूर से कोरोना संक्रमण को हम सब रोकने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. પાર્ટીમાં અમારા પાર્ટી શહેરના લોકો એટલા બધા જાગૃત થઈ ગયા કોરોના મહામારીને લીધે, એ લોકો પોતાને ફીલ કરવા લાગ્યા કે નહીં અમારે સ્વૈચ્છિક રીતે બંધ કરવું જોઈએ ને અમને 100% પ્રતિસાદ મળ્યો છે. હું આ બજારમાં સર્વે કરવા નીકળ્યો છું, હમણાં દમણીપાડે જાઉં છું, બાલાખાડી જાઉં છું, પણ મને એક પણ દુકાન મને કોઈ ખુલ્લી લાગતી નથી. બહુ પરફેક્ટ છે, કાયદાની રીતે કામ કરે છે ને પોલીસ મીન્સ કે પીએસઆઈ શ્રી ગોહિલ સાહેબનું પણ બહુ કામ પ્રોસેસિંગ છે. જો કદાચ ભગવાન કરે કે આ સંક્રમણ કાબૂમાં આવી જશે, પણ કદાચ આવતા બધા રવિવારે આ દુકાન બંધ રહેશે ને લોકો કદાચ અમે એક વિચારી રહ્યા છે કે વચ્ચેના એકાદ દિવસે પણ અમે બંધ આપીએ એવું કંઈ વિચારી રહ્યા છે. લોકોનો સહકાર બહુ ટોપ મળ્યો કે તમે સરકાર કે તમે નગરપાલિકા પ્રમુખ છે, તમે ફર્સ્ટ ક્લાસ કામ કર્યા છે એવો મને સહકાર મળ્યો છે. હમણાં જ ફરી આવ્યો છો, લોકોનો જોરદાર આવકાર મળ્યો છે. હું જિલ્લા પંચાયતના શાસક પક્ષના નેતા તરીકે હું આજે પાર્ટીની અંદર જે સ્વૈચ્છાએ બંધનું એલાન કરવામાં આવેલું એ તમામ દુકાનદારોએ અને આમ જનતાએ એનો સહકાર આપી સંપૂર્ણ બંધ પાડવામાં આવેલ છે. રોડ એકદમ સુમસામ છે અને લોકોનો જે સહકાર છે અને લોકોમાં થોડી જાગૃતિ આવી છે કે કોરોના મહામારીથી અને કોરોના વાયરસથી લોકો ડરી રહ્યા છે અને આ જ રીતે લોકોએ માસ્ક પહેરવું જોઈએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવું જોઈએ, તો જ આપણે કોરોનાને ભગાવીશું. પોલીસ બંદોબસ્ત પોલીસનો ગામડે ગામડે અને ગલીએ પોલીસ આટાફેરા કરી ચુસ્ત બંદોબસ્ત પોલીસનો ગોઠવાયેલ છે.
પાર્ટીમાં રવિવાર એટલે કે લોકોએ સ્વૈચ્છિક બંધનો જે કલેક્ટરનો આદેશ આપ્યો હતો, અપીલ કરી હતી, તેનો આજે અહીં સારો એવો સહયોગ મળી રહ્યો છે. પારડી નગરપાલિકા નગરજનો વેપારીઓ સ્વૈચ્છિક પોતાની દુકાનો બંધ કરી અને સારું એવું વાતાવરણ સર્જાયું છે કે કર્ફ્યુ અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે. જેવું કે ગયા વર્ષે આ રીતે કર્ફ્યુની મોસમ આવી હતી, પરત આ રીતે આવી છે, પણ અત્યારે ગયા વર્ષ કરતાં પણ કેસો વધી રહ્યા છે. ત્યારે લોકોએ સ્વૈચ્છિક આ રીતે બંધ કરશે તો કોરોનાની જે ચેન જરૂરથી તોડશે, એમાં બે મત નથી. પાર્ટી અમૃત પટેલ સંકલ્પજી. સંપૂર્ણ લોકોનો સાથ અને સહકાર આપી રહ્યા છે ગવર્મેન્ટને, અને કમ્પ્લેટ બધું બંધ જ છે. ઘણું સારું છે, સંપૂર્ણ બંધ જ છે. કોઈ પણ દુકાન મેડિકલ છે, બધી દુકાનો લગભગ બંધ છે. મેડિકલમાં સહકાર સારો છે, પરંતુ પબ્લિક બહાર નથી નીકળતું. મેસેજ માટે કે ભાઈ માસ્ક પહેરો, માસ્ક જરૂરી છે, અને સેનિટાઈઝર કરો, અને કોરોનાથી બચવું જરૂરી છે. નથી કેસો વધી રહ્યા છે, પણ ગવર્મેન્ટે માટે પૂરા પગલાં ભરી રહી છે. टूंक समय कंट्रोल में आ गया से वो लागे છે. वापी टाउन में कोरोना के बढ़ते हुए केस को देख वैक्सीन कैंप का आयोजन करते 200 लोगों ने लाभ उठाया. बलसाड़ जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर वापी ज्वेलर्स एसोसिएशन और वापी तेरापंथ युवक मंडल के सहयोग से वापी बाजार में कोविड-19 वैक्सीन कैंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शुरू किया गया था और लोगों को वैक्सीन दी गई थी, जिसमें 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई थी. वैक्सीन लेने के लिए अपने आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने करवाया था और अंदाजित 200 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन का लाभ लिया था और अन्य लोगों को वैक्सीन लेने के लिए अपील भी की गई थी. वलसाड सहित संघ प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली में कोरोना का विस्फोट. वलसाड जिले में 30, दादरा नगर हवेली में 44 और दमन में 32 कोरोना केस पॉजिटिव. कपराड़ा के एमएलए को कोरोना पॉजिटिव आते होम क्वारंटाइन हुए. पार्टी शहर के भाजपा प्रमुख के संबंधी जो पार्टी 4 रस्ता पर आमलेट के व्यवसाय से जुड़े परिणित युवान की कोरोना इलाज करते समय मौत. बलसाड़ जिला सहित पड़ोसी संघ प्रदेश दमन दादरा नगर हवेली में कोरोना के केसों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जबकि जिले में कोरोना के केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो रविवार के रोज कोरोना बेकाबू होते आरोग्य तंत्र में फफड़ाहट फैल गई थी. कोरोना का विस्फोट होते बलसाड़ जिले में कोरोना के 30 केस पॉजिटिव के साथ एक मरीज की मौत होती जिले में परिस्थिति गंभीर बनी है. सबसे ज्यादा बलसाड़ में 12, पाडी में 8, जिसमें दमनी झापा, अतुल पार्क, उदवाड़ा नीलकंठ सोसाइटी, तापी कॉम्प्लेक्स, साई कृपा, प्रीमियर, सरन पारसी फलिया और वापी में 5, उमरगाम में 5 मिलाकर कुल 30 केस दर्ज हुए थे, जबकि 16 मरीजों को छुट्टी भी दी गई थी. आज कोरोना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसमें वापी छरवाड़ा के 74 वर्षीय पुरुष की मौत हुई थी. इसके अलावा कपराड़ा के विधायक भाजपा के जीतूभाई चौधरी का भी कोरोना केस पॉजिटिव आते होम क्वारंटाइन किए गए हैं. साथ ही पाडी शहर भाजपा प्रमुख के संबंधी नीलेश भाई पटेल का कोरोना में उपचार के दौरान निधन होते पाडी नगर में शोक की कालीमा छा गई थी. जबकि पाडी में बढ़ रहे कोरोना और मृतकों के केस को लेकर लोग अब सतर्क रहे और रात्रि को स्वैच्छिक लॉकडाउन में सहयोग दे वो जरूरी बन रहा है. जबकि बलसाड़ जिले से ज्यादा संघ प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसमें आज दादरा नगर हवेली में 44 केस और दमन में 32 मिलाकर कुल 74 कोरोना पॉजिटिव केस आते प्रशासन और आरोग्य तंत्र चिंता में है. तो लोगों को अब काम के बगैर कोरोना हॉट प्लेस सूरत मुंबई में ट्रैवल्स करते हैं, जिसके सामने अब प्रजा को ही सरकार की गाइडलाइन का सख्त पालन करने के लिए अपील की गई थी, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे केसों को देखकर अब सावधानियां बरतने की और कदम उठाने की मांग सब लोग कर रहे हैं और तंत्र भी बता रहा है. तो पाडी नगर और तहसील की जनता सावधानियां बरते, जिससे कोरोना संक्रमण को अंकुश में लाया जा सके. कपराड़ा के कुमगत हाईवे पर सुपारियों से भरी हुई ट्रक की ब्रेक फेल होते ट्रक उलट गई. नेशनल हाईवे नंबर 848 कपराड़ा के कुंभ घाट पर से नीचे उतरते समय ट्रक नंबर के A14B 3156 के चालक ने ब्रेक फेल होते स्टीयरिंग पर से संतुलन गुमाते दुर्घटना हुई थी. ट्रक में गुटखा बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाले सुपारियों की बोरियां भरी हुई थी. दुर्घटना में ट्रक चालक और क्लीनर का चमत्कारिक बचाव हुआ था,
जबकि दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलते ही तुरंत कपराड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और जांच शुरू की थी, जो कि बार बार यहां हो रही दुर्घटनाओं के चलते तंत्र ध्यान दे ऐसी आवाज लोगों में उठ रही है। सूरत में कोरोना का तांडव, उपघरों में कई घंटे तक शव का अंतिम संस्कार वेटिंग में रहते आक्रोश। अब तक हमने देखा कि कोरोना की वजह से अस्पताल में या दवाइयों के लिए कतार में खड़े रहते थे, पर अब की बार अंतिम संस्कार के लिए श्मशानों में कतारें लगी हुई देखने को मिली हैं, जिसमें भी पैसे लेकर तेज से तेज अंतिम संस्कार कर देते होने का खुद मृतक के परिजनों ने बताया, जो आक्षेप मानवता को शर्मसार करती है। अश्विनी कुमार में आए श्मशान गृह में वहां के कर्मचारियों द्वारा पैसे लेकर अन्य के शवों को बाजू में रखकर दूसरे शवों का अंतिम संस्कार करने की शिकायतें उठ रही है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। सूरत में ऐसी स्थिति बन गई है कि कोरोना में दुख झेलकर दम तोड़ने वाले मरीजों को अंतिम संस्कार में भी शांति नहीं मिली। सूरत में मौतों की संख्या बढ़ रही है। वैसे तो सामान्य परिस्थिति में श्मशान गृह में मृतदेहों को अंतिम संस्कार तेज गति से हो जाते हैं, पर कोरोना महामारी में अब इतने शव आ रहे हैं कि सूरत के अन्य श्मशानों में से अश्विनी कुमार की हालत वैसे ही हुई है। शवों की अब कतारें लगी है, जिसकी वजह से श्मशान गृह के संचालकों द्वारा नाम दर्ज कर टोकन दिया जा रहा है। वंदे मातरम मित्रों, હું હરીશભાઈ ગુજર, અશ્વની કુમાર। આજે તારીખ 9/4/2021 બહુ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે। લોકોના ટોકન નંબર લાવો ભાઈ, હું પોતાના ચિઠ્ઠી બહાર કાઢો। આજે સુરત છે અશ્વની કુમાર સ્મશાન ભૂમિમાં આ ટોકનના નામે મોટો ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે। લોકો પાસે 1000 1500 2000 રૂપિયા લેવામાં આવી રહ્યા છે। જે લોકો પૈસા આપે છે એને લાશ પાડવા માટે જવા દેવામાં આવે છે, અને 1 નંબર 2 નંબર 4 નંબરવાળા અહીંયા હાજરમાં છે, અને 18 નંબરની ડેડ બોડી મળી ગઈ છે। બહુ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે। મળી ગયું ભાઈ તમને? હા, મળી ગઈ। ચાલો આવી જાઓ ભાઈ, તમે અહીંયા આ ભાઈને ડેડ બોડી મળી ગઈ છે ટોકન। આજે બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે। જો અમારા સુરતના આટલા ધારાસભ્યો સાંસદીઓ ના કરી શકતા હોય તો અમને શરમ આવી જોઈએ। શું પરિસ્થિતિ તમારી જોડે છે? પૈસા તમારી 11:30 વાગ્યાનો આવેલો છું, અને 5402 મારો નંબર છે। 5418ના પૈસા 2000 રૂપિયા લઈને એને ડાયરેક્ટ બોડી અગ્નિ સંસ્કાર માટે જવા દીધી। તો અમે લોકો અત્યાર સુધી શું કરતા હતા? 5411 મારો નંબર પણ છે। પૈસા જોતા હોય, લાશના નામે કમાવવું હોય તો બોર્ડ મારો કે ભાઈ 2000 રૂપિયા તમે લઈને આવશો તો તમારી સગાની ડેડ બોડીને સળગાવવામાં આવશે। 2000નું બોર્ડ મારી દો તો અમે ઘરેથી સગવડતા કરીને આવીએ। આજે સુરતના તમામ અધિકારી, તમામ ધારાસભ્યો, સાંસદશ્રીઓ અને કોર્પોરેટરોની આજે અશ્વની સમાજમાં જરૂર છે। તમે અહીંયા આવો અને આ પરિસ્થિતિનું તાકીદે ધ્યાનમાં લો, તો જનતા તમને જવાબ આપશે આવવાના સમયમાં। જય હિન્દ, વંદે માતરમ। હું સવારે બપોરે 12:30 વાગે અહીંયા આવ્યો છું, ત્યારનો અત્યારે 6:30 વાગવા આવ્યા છે। ટોકન માટે ઉભેલો છું અને હજુ મારો નંબર નથી આવ્યો। 5401 નો નંબર ચાલે, પૂછવામાં આવ્યું કેમ કે 5401 ચાલે છે, તમારો નંબર 5411 છે। જ્યારે મને પાછળથી ખબર પડે છે 5418 વાળાનું ત્યાં ડેડ બોડી અગ્નિ સંસ્કાર અપાઈ રહી છે। 5418 વાળાનું કેમ કે પૈસા 2000 રૂપિયા લીધા। 2000 રૂપિયા મારે તો આ તકલીફ છે ને સાહેબ, કે મારો 3 નંબર છે, હજુ આવ્યો નથી। 18 નંબર ચાલે છે તો 3 નંબર કેમ નથી આવ્યો? પછી નંબર આપવાનું કારણ શું? મારે પણ એક છે 5402 નો વારો છે, 5418 નો વારો આવી ગયો તો હું ક્યાં હતો અત્યાર સુધી? કામકાજ છે। હોસ્પિટલમાં 5 કલાક સુધી રાહ જોઈ ત્યારે અમને ડેડ બોડી મળે, 6 કલાક સુધી રાહ જોઈ ત્યારે અમને અગ્નિ સંસ્કાર કરવા માટે હજી મોકો નથી મળ્યો। 6 કલાક થઈ, બરાબર? ચાલુ હતી બોડી પાછળ 10 કલાક બગાડવાની છે। કોઈ વ્યવસ્થા છે જ? હોસ્પિટલમાં જગ્યા નથી મળતી। दादरा नगर हवेली में महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्मदिन अवसर पर भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दादरा भाजपा कार्यालय का किया गया उद्घाटन। 11 अप्रैल से दादरा भाजपा कार्यालय दादरा वासियों के लिए खुला रखा गया। इस कार्यालय से केंद्र में चल रही सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही दादरा क्षेत्र में हो रही सभी समस्याओं को भी सुना जाएगा।
और उस पर कार्य भी किया जाएगा। इस उद्घाटन के अवसर पर दादरा नगर हवेली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी सिलवासा जिला अध्यक्ष अजय देसाई, संगठन के विवेक धाकड़ जी, दादरा के भातीबेन, चुने हुए प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। जिसके बाद पार्टी की कार्यकारिणी मीटिंग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सिलवासा जिला अध्यक्ष की अनुशंसा के दादरा मंडल के प्रभारी भूपेंद्र कुमार चौबे की नियुक्ति भी की गई थी। पार्टी ने जो व्यवस्था है, सुनील भाई हमने कीधु कि पार्टी की विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, ने जे कार्यकर्ता है ये सौथी लास्ट। तो कार्यालय मुख्य कार्य शू है? भारतीय जनता पार्टी जो कार्यालय है, आज दादरा खाते भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उद्घाटन करवामां आव्युं छे। एमां प्रदेश प्रमुख दिवेशभाई टंडेल आवेला हता अने अजयभाई अने एमनी पूरी टीम, नगरपालिकाना वाइस प्रेसिडेंट अजयभाई देसाई अने एमनी पूरी टीम आवेली हती अने अमारा दादरा पंचायतना जे चूंटायेला प्रतिनिधि छे, अमारा मेम्बरो ए पण हाजर हता, गामना लोको पण हाजर हता, भाईओ बहेनो बधा ज हाजर हता। अने આજના કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટનનું મુખ્ય તત્વ એ છે કે અમે દાદરા ગામમાં 2-4 મહિનાથી જે વસ્તુ થતી નથી હતી, જે લોકોના કામ છે, ગરીબ ભાઈઓ બહેનોને કામ નથી થતા અને કોઈ પણ આપણે એપ્લિકેશન કે એવું લઈને જઈએ તો આગળવાળા કોઈ કરતા નહીં હતા, તો એના માટે અમે આજે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે કે અહીંયા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદીજીની જે પણ સ્કીમ હશે એના હરેક કામ અહીંયા દાદરા કાર્યાલયથી કરવામાં આવશે। અને અહીંયા કામ કરવા માટે અમારા મંડળ પ્રમુખ અજીતભાઈ બેઠા છે, અમારા સાથે ભૂપતભાઈ ચૌબે છે, હું પોતે પણ છું અને અમારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ પણ અમારી સાથે છે। અને દાદરા ગામના હરેક ભાઈઓ બહેનોએ કોઈ ડરવાની જરૂર નથી, કોઈ તમને ગભરાવે કે કઈ ગલત વસ્તુ પણ કહેશે એના માટે કઈ ગભરાવાની જરૂર નથી। તમારી સુરક્ષા, તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, સુરક્ષા તમને મળે पुलिस कर्मीओथी के पछी सरकारी अधिकारीओथी, ए तमाम जवाबदारी बधी अमारी छे। अमे तमारी साथे रहीने तमारा साथे आवीशुं काम करवा माटे अने जे पण कोई जमीननी लेवड देवड के कोई तमने गभरावे डरावेमां पण गभराવાની જરૂર નથી। पहले से बीजेपी में अच्छा है, दादरा बड़ा विश्व में गड़बड़ हो गया था, हमारे पार्टी के आदमी लोग हमको दगा देकर छोड़ गए। इसकी वजह से हम लोग ने नया ऑफिस खोला है और तन मन धन से हम लोग सारे पब्लिक दादरा के उसका जो भी ये काम हम करने के लिए इधर बैठे हैं, इसकी ऑफिस खुली है हम लोग। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारती बहन एकदम ये लायक है कि इधर बैठकर सबका काम करे और वर्षों से कर रहे हैं। आज राजनीति में उसका बहुत सालों से योगदान है और वो सही तरह से यहाँ बैठेंगे और मेरी आशा है कि वो अच्छी तरह से दादरा को चलाएंगे। और दूसरा, आज मैं जाहिर करता हूँ कि दादरा के प्रभारी भूपेंद्र चौबे को मैं जाहिर करता हूँ और वो भी अच्छी तरह से बात रख कर गांव में अच्छी तरह से निभाएंगे और मजबूत बनाने का काम करेंगे बीजेपी सरकार। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाना पोंडा में स्वैच्छिक बंद के समर्थन में बाजार बंद। वलसाड जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए वलसाड जिला कलेक्टर ने रविवार के रोज नगरजनों को एक दिवसीय संपूर्ण बंद रखने के लिए अपील की गई थी, जिसको लेकर नाना पोंडा सहित समग्र कपराड़ा तहसील में बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिला था। व्यापारियों ने अपने रोजगार के क्षेत्रों को बंद रखा था, साथ ही नाना पोंडा के मुख्य बाजारों में लोगों ने स्वयंभू बंद रखा था। सभी दुकानें भी बंद रखी गई थी, तो सब्जी मार्केट सहित के अन्य जगहों को भी बंद रखा गया था। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वलसाड जिला कलेक्टर के आह्वान को लोगों ने अच्छा सहकार दिया था। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। के सरोदी गांव के प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या करके आत्महत्या का अंजाम देते पति को रेलवे ट्रैक पर लेटा दिया। दादरा नगर हवेली में कोरोना केस बढ़ते सिलवासा सामरवनी पंचायत हॉल में वैक्सीन केंद्र की शुरुआत। वलसाड सिविल अस्पताल के कर्मचारियों की भयानक लापरवाही सामने आई।
नगर में व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक बंद में 100% सफलता प्राप्त हुई। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।